ऑल राइट, चलो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एन एग्जांपल would be कि we have a ring. Okay, let's say we have a ring, like we have disk ले लेते हैं. Let's take a disk like this. This is a disk. Disk है and इसका mass है m and radius है r. All right. Now ये जो डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर से पास करने वाला एक्सिस विच इज दिस वन, इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis passing through the center and perpendicular to the disk, है ना. So we know this. इसका moment of inertia क्या है? It is mr square by 2. Okay. Now if I ask you what is the moment of inertia of this disk about this axis, इसका formula तुमको बताया गया था, but let's use parallel axis, sorry, perpendicular axis theorem to find this. Okay. If I ask you what is this I, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, सो ध्यान से सुनना इसका. इसके लिए व्हाट विल डू इज कि इफ यू हैव अ डिस्क लाइक दिस, ये देखो, ये डिस्क है, एंड अगर इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगा. व्हाट्स द डिफरेंस हियर? इज देयर एनी डिफरेंस हियर इन दीज टू केसेस? ये दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगा. कैन यू सी दैट? both are the same, है ना. But you could also see that both these two axes are perpendicular to each other. Is this clear to you all? ये top view है. You can look at the top view. Top view से देखे तो this possibility one and this possibility two, they are basically the same thing, है ना. एक अलग साइड से देख रहे हो ऐसा, या किसी और एंगल से देख रहे हो वैसा लगेगा ना. तो what I'll do here is कि इधर एक और एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर एक और एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ passing through that point. Now this axis is perpendicular. इस एक्सिस का भी क्या रहेगा? I. Now this axis is perpendicular to the original axis. ये वाला एक्सिस के perpendicular है. Can you see that? ये this is perpendicular. ठीक है. Now ऊपर देखो, ये वाला केस दिख रहा है. It is similar to this one. Can you see that these two are similar now? ये वाला केस एंड ये वाला केस, जनरल केस, they are the same. So इधर I1 क्या हो गया? ये I2 ये हो गया, एंड दिस इज I3, है ना. So let's just write that. I1 क्या रहेगा? I'll write I1 plus I2, I1 plus I2 is equal to I3. What is I1? I1 का वैल्यू है I, प्लस I2 का वैल्यू भी क्या है? I है, एंड I3 का वैल्यू क्या है? mr square by 2. So from here you'll get I is equal to mr squared by 4. Understood? You could check that, टैली कर सकते हैं. देखो पीछे हमने ये टेबल बनाया था. You can see this mr square by 4 इस एक्सिस के ऊपर, इसका mr square by 2, इसका mr square by 4. You can do the same thing with the ring. Can you see that? इधर रिंग में भी सेम चीज कर सकते हो.
When you do it with the ring, I plus I would be mr square. So I would be equal to mr square by 2. Any doubts? Any doubts? So this was the perpendicular axis theorem and this was the parallel axis theorem. Okay. Now इस parallel axis theorem में एक और बहुत important सा point दिखता है. What is the parallel axis theorem? A slight recap. If you have if you know the moment of inertia of a body about an axis passing through the center of mass, then the moment of inertia about an axis which is parallel to this axis is equal to IC plus MD squared. ठीक है. Now इधर से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या समझ में आता है कि the a body will have least moment of inertia about an axis passing through the center of mass. ठीक है. पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास मतलब क्या हो गया? डी का वैल्यू 0 कर दो. ठीक है. डी का वैल्यू 0 कर दो. आई इज इक्वल टू आई सी. दैट इज द मिनिमम वैल्यू. क्लियर है? नाउ ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया सबको. सो गोइंग बैक, हमने ये सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया था. वी आर डन विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और पॉइंट है, आई जस्ट रिमेंबर्ड राइट नाउ. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जाइरेशन. ओके, लेट्स राइट दैट. Radius of gyration. ठीक है. So let's say you have a body like this. This is some body, three-dimensional body, and the moment of inertia of this body about an axis is I. कोई भी एक्सिस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है. And let's say this body has a mass m. इस बॉडी का मास है m. What I'll do here is I'm going to convert this. जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में क्या करते थे? We used to imagine that the complete mass of a body is at one point ना. तो उसी तरह से let's imagine कि this body is converted to a single point. ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल में मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ. The axis remains the same. The axis remains the same and moment of inertia remains the same. तो उस पॉइंट पार्टिकल को कितना दूर रखना पड़ेगा मुझे? लेट्स से इतना दूर रखना पड़ेगा. ये देख रहे हो, इस पॉइंट पार्टिकल को ऑफ मास m इतना दूर रखना पड़ेगा. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस is called radius of gyration. This distance is called radius of gyration and it's denoted by k. So you know for a particle अगर तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो इधर से अपने को I का वैल्यू पता है कि m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना? k. तो m इंटू k स्क्वायर. तो दिस implies कि k is simply going to be root of I by m. Root of I by m. Is that clear? Now I'll give you an example. Example देता हूँ. तो solid sphere for example.
तो सॉलिड स्फीयर का आई का वैल्यू कितना होता है? 2/5 mr² होता है। 2/5 mr²। तो इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली ज्यादा इतना नहीं सोचना है, इसको mk² लिख देंगे। mk² लिख देंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आया? √2/5 टाइम्स आर। √2/5 टाइम्स आर मिला। तो इसका मीनिंग समझना, इफ यू हैव ए स्फीयर, इफ यू हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m, एंड उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दिस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल, सिंगल पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m। ये पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये भी I रहेगा। नाउ ये दूरी कितना है? ये दूरी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, इट इज रूट अंडर रूट ऑफ 2/5 टाइम्स r। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड दिस रेडियस इज r, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और इसका मास है। समझ गए? तो ऐसा कर सकते हैं। Have you understood this? Now let me just give you a question based on this, सिंपल सा, जल्दी करके बताओ। You have a रॉड, एंड इस रॉड का मास है m, एंड इट्स लेंथ इज l। ठीक है, दिस इज a rod of mass m and length l, and you are supposed to find the radius of gyration, ठीक है, about an axis which is l/4 distance from the edge। okay, l/4 distance from the edge। find radius of gyration कितना रहेगा? चलो try it out, I'll give you 1 minute to solve this। डन।
तो सबसे पहले इसके अबाउट का आई कैलकुलेट करना होगा, आई कैलकुलेट करेंगे। एंड व्हाट इज आईसी हियर? आईसी कितना होता है? एम एल स्क्वायर्ड बाई 12 होता है। सो दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, आईसी कैसे आया? ये टेबल में है, देख सकते हैं। इट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 राइट हियर। ओके, सो एम एल स्क्वायर बाई 12, तो आईसी प्लस एम डी स्क्वायर्ड। नाउ आईसी वाला एक्सिस कहाँ पे है? दिस इज दी आईसी एक्सिस है ना। ये आईसी वाला एक्सिस है। एंड यू कुड क्लियरली सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस थोड़ा मतलब इट्स नॉट ड्रॉन विथ स्केल, बट ये डिस्टेंस भी यू कैन सी दैट इट इज L/4 है ना। D is equal to L/4, so this implies I is equal to IC, which is ML square by 12 plus M into L/4 का square. What is that? ML square by 12 plus ML square by 16. तो ये कितना आएगा? ML square by 4 कॉमन निकालो तो 1/3 plus 1/4 रहेगा। So that is 7/12 हो जाएगा। 7/12 and 7 ml square by 48, I guess. 7 ml square by 48. Okay, so ये I मिला। So that implies, इसको क्या लिखेंगे अपने? 7 ml square by 48 is equal to mk square लिख देंगे। Implies k is root of 7/48 times L, या फिर root of 7/3 into L/4. Is that clear? Is that clear? Okay. Now, next important topic is torque. Okay. Next important topic is torque. So, torque क्या है? I'll go directly to the definition. Okay. तो अगर एक point है O, this is a point O, and let's say this is another point P. This is another point P. Okay. And इस point P पे it could be part of some body. Okay. This must be some part of the body. ये कोई body है, ठीक। अब ये पॉइंट P पे अगर एक फोर्स लगता है लाइक दिस, ये एक फोर्स वेक्टर है F, ठीक। एंड पॉइंट O एंड पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। पॉइंट O एंड पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ओके, जस्ट लेट मी, इस तरह से, दिस इज पॉइंट P, ठीक। एंड ये जो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये जो R है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ओके, एंड दिस इज द एंगल थीटा। ओके, आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल दीस पॉइंट्स। कौन सा क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला
आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ पी with respect to O. F is the force acting at acting नहीं बोलूंगा, applied force applied at point P. ठीक है? And what is theta? Theta is the angle between R vector and F vector. ठीक है? Now can you see that this will induce a rotation? इसके वजह से ये बॉडी क्या करेगा? It will try to rotate like this ना. इस पॉइंट O के अबाउट ये फोर्स क्या करेगा? इट विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी. दिस फोर्स, द फोर्स F वेक्टर कैन इंड्यूस या कैन cause the body to rotate about point O, right? Point O के about rotate करा सकता है. So this rotational effect of force, this rotational effect of force is quantified by a physical quantity called torque vector. ठीक है? called torque. एक मिनट लिख देता हूँ, called torque. एंड ये टॉर्क जो है उसको टाउ से डिनोट करते हैं. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलराइट. नाउ ये जो टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन, हाउ विल यू गेट द डायरेक्ट, सॉरी, ये टॉर्क वेक्टर कैसे डिफाइंड एज, इट कैसे डिफाइंड है? टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट of position vector and force vector. Cross product of position vector and force vector. अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना? आई जस्ट रियलाइज कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है. क्या सबको क्रॉस प्रोडक्ट पता है? नहीं पता तो आई विल टीच यू दैट राइट नाउ. ऐसा कोई है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता? मैं ये समराइज कर देता हूँ इस चीज को. यू नो दैट कि ए, इफ यू हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, ध्यान से देखो, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए and this is vector B, and let's say that this is the angle theta between them. ये A वेक्टर हुआ, ये B वेक्टर हुआ. A क्रॉस B कैसे दिया जाता है? A क्रॉस B इज इक्वल टू, का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन होता है एन कैप. ठीक है? एन कैप इज लाइक दिस. एन कैप डायरेक्शन रहता है एंड
what would be the vector? A cross B vector would be like this. A cross B vector would be perpendicular to both A and B. Okay, this is our A cross B vector. ठीक है, एंड ये एन कैप का डायरेक्शन कैसे मिलता है? फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल. ओके, अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो क्या आएगा? बी क्रॉस ए करूंगा तो क्या आएगा? इट वुड बी ऑपोजिट ना. बी क्रॉस ए would be in the opposite direction. Let me just draw that as well. B cross A would be opposite. Okay, you should understand that both of them as a perpendicular. Can you see that? They're perpendicular. A cross B vector is perpendicular to A vector, and A cross B vector is also perpendicular to B vector. Okay, सम इतना क्लियर है ना सबको? ये तो पता होगा ना सबको? इसके बेस ये पता है मान के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये पता है मान के ही मैं पढ़ा रहा हूँ. आर क्रॉस एफ करेंगे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो इधर से अपने को क्या मिला? देखो हियर आर क्रॉस एफ मतलब टाउ का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इट इज आर एफ साइन थीटा. समझ गए? आर एफ साइन थीटा. नाउ if you try to draw that torque vector on this diagram, it would look like this. Sorry, it would look like this. Can you see that? This is the torque vector. It is perpendicular to both R and F. Okay, it is perpendicular to, देखो मैं इधर इधर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ जस्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया. एफ के साथ भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ टॉर्क को. आई जस्ट मेक इट डॉटेड लाइंस कर देता हूँ इसको. ये टाउ वेक्टर ऐसा. समझ गए? Are you guys able to understand this 3D diagram? Now, इसको कैलकुलेट करने के लिए हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? ठीक है, ये तो मैथमेटिकली वी हैव अ फॉर्मूला. ठीक है, मैथमेटिकली वी हैव अ फॉर्मूला, बट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? इसको कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दैट. ठीक है, देयर आर टू वेज. तो मेथड वन इज कि दिस इज अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन. ठीक है, ये पॉइंट ओ, आई एम नॉट ड्रॉइंग द बॉडी. ओके, मैं अभी बॉडी नहीं ड्रॉ करने वाला. आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दी 2 points. दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट पी. ठीक है,
ये क्या हुआ इस तरह से, दिस इज आवर आर वेक्टर, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर किधर है, एफ वेक्टर इज लाइक दिस. वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कुड डू इज, मेथड वन में क्या कर सकते हैं कि ये जो एफ है, दिस एफ वेक्टर, यू कैन ब्रेक दिस एफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स. दिस एफ वेक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स. ये थीटा है ना एंगल, ठीक है. वन कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू आर, दिख रहे हो ये वाला, one component which is parallel to r, what is this value, f cos theta, and the other component which is perpendicular to r, ये कितना है, f sin theta. कैन यू सी दैट कि f cos theta नहीं रोटेट करेगा r को, कौन रोटेट करेगा, f sin theta. सो ये जो टॉर्क है, टॉर्क जिसने प्रोड्यूस किया, टाउ, कैन बी रिटर्न एज व्हाट, इधर से देखो, टाउ वुड बी r into f sin theta, एंड ये जो f cos theta है उसको क्या लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको f पैरेलल नाम दे देता हूँ, and this one is the perpendicular component. So from here I could write tau is equal to r times perpendicular component of force, r times perpendicular component of force. डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हैं. Is that clear? Now method 2. मेथड 2 में क्या करेंगे, ड्रॉ इट अगेन, ये पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, ये हो गया R, एक सेकेंड, ठीक है, ये R हो गया, एंड this right here is F. What I'll do here is कि ये जो F वेक्टर है, F वेक्टर को एक्सटेंड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है. आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को एक्सटेंड कर दे रहा हूं, देखो कैसा मिलेगा. ऐसा एक्सटेंड होगा दिस लाइन, ठीक है, ऐसा एक्सटेंड होगा, एंड दिस एंगल इज थीटा. Okay, now if this angle is theta, can you see that this angle is also theta? What is this line, by the way? This is the line of action, line of action of force vector. ठीक है. Now what I'll do here is I'll drop a perpendicular, एक perpendicular drop कर रहा हूँ from point O. ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O. तो ये जो r वेक्टर दिख रहा है ना, इस r वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स में बांट रहा हूँ. एक ये वाला कंपोनेंट हुआ,
and the other one is this component. दो components में बांट रहा हूं. ये क्या है? This is R perpendicular and this is R parallel. ठीक है, parallel to force and R perpendicular. तो इधर से देखो क्या लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इज दी फॉर्मूला. इसको मैं लिख देता हूँ आर साइन थीटा इंटू एफ, एंड यू कुड क्लियरली सी दैट दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू क्या आया? दूसरा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू द फोर्स. ओके, नाउ इस चीज को, ये जो लेंथ है ना, इसको we also call it as the lever arm. Okay, it's also called lever arm. So is this clear? Is this clear? ये पूरा concept clear है टॉर्क का? टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर है? आर क्रॉस एफ आया है ना? ठीक है, तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. A force F is equal to 2 I cap minus J cap plus 3K cap acts on a point P, coordinates है 1, 2, 3. ओके, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 4 लिख देता हूँ. फाइंड द टॉर्क on the point about first one origin O, and second one point Q, which is -3, 1, 0. Okay, so how do you solve this? सबसे पहले अपने को एक एक चीजें चाहिए होंगे. तो एफ वेक्टर इज गिवन टू अस, गिवन चीजें लिख देते हैं. एफ वेक्टर इज गिवन टू अस. तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को आर चाहिए. आर वेक्टर क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ पॉइंट, सॉरी, पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ द ओरिजिन होगा. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज सिंपली गोइंग टू बी, कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, ठीक है, पॉइंट पी माइनस ओरिजिन. तो इसका क्या आएगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ओरिजिन का तो जीरो ही होता, तो यही हो गया आर वेक्टर. ठीक है, सो व्हाट इज द टॉर्क वेक्टर? इट इज आर क्रॉस एफ, विच इज यहाँ पे आई जे के, यू नो दिस राइट, आई जे के करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका. आर का क्या क्या है? 1, 2, 4, एंड फोर्स का क्या क्या है? 2, -1, 3. तो इसको कैसे लिखेंगे? आई के कोएफिशिएंट को कैसे लिखेंगे? आई के कोएफिशिएंट के लिए देखो, फॉर आई यू ये वाला और इसको काटोगे तो ये 4 बचे ना, तो उसको लिख देते हैं. तो क्या क्या आएगा देखो, 2, 4, -1 एंड 3. फिर नेगेटिव करेंगे, ऑल्टरनेट होते रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव करके. जे का क्या रहेगा? 1, 4, 2, 3. फिर देन प्लस करेंगे के लिए,
आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि जे के लिए क्या किया मैंने, इसको और इसको कट किया, तो ये 4 बचे, ठीक है। उसी तरह से के लिए क्या करूंगा, इसको और इसको कट करूंगा, तो ये 4 बचे। तो के का क्या रहेगा, 1 2 2 -1। नाउ व्हाट्स द ऑर्डर, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस है ना। सो आई टाइम्स 2 इंटू 3 -4 इंटू -1, ठीक है, माइनस जे कैप टाइम्स अगेन 1 इंटू 3 देन 4 इंटू 2, इस तरह से 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 3 -4 इंटू 2 प्लस जे कैप टाइम्स क्या आएगा, 1 इंटू -1 -2 इंटू 2। तो यहाँ से टॉर्क वेक्टर कितना आया, यू कुड डू दी कैलकुलेशंस, ये 6 प्लस 8 हो गया, तो 10 आई कैप हो गया, 10 आई कैप माइनस ये कितना है, 3 -8 इस -5, तो ये +5 हो गया, +5 जे कैप, एंड दिस इज -1 -4, तो -5 हो गया, -5 के कैप। एंड बाय द वे इसका यूनिट क्या रहेगा, फोर्स इनटू पोजीशन है ना, तो इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर। अंडरस्टूड। द सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ट्राई इट आउट। सेकंड क्वेश्चन के लिए जस्ट वन स्टेप आई डू दैट, आर वुड बी इक्वल टू पॉइंट का पोजीशन माइनस जहां से कैलकुलेट कर रहे हो उसका पोजीशन, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, डिफरेंस कितना है, 1 माइनस -3 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 4 - 0 के कैप। ये कितना हो गया, 4i प्लस जे प्लस 4 के कैप। इसको यूज करके ट्राई इट आउट, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। चलो, shall I'll take the attendance now. Just a moment, please. Okay, see you tomorrow.